अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम शहर मैसूर में वाक़े बहुत ही मशहूर व मारूफ इदारा जिसे फारूखिया इदारा कहा जाता है, वहाँ पर आप पहुँचे हैं। हमारे दरमियान एक ऐसी अजीम शख्सियत जो बग़ैर किसी तारुफ की मोहताज पता नहीं कितने हज़ारों लाखों बच्चों ने इनसे तालीम हासिल कर कर जो है अलग अलग जगहों पर अपना एक मुकाम हासिल किया है। उस्ताद वो चिराग है जो जलकर रोशनी दे दे, उस्ताद वो चिराग है जो जलकर रोशनी दे दे, खुद मिटके भी वो शागिर्दों का मुस्तकबिल संवार दे। आज हमारे दरमियान प्रोफेसर जनाब सईद अहमद साहब जो सबकी दिलों की धड़कन है, आज फारूखिया इदारे में खुसूसन उनकी तहनीत, उनकी हौसला अफजाई, उनकी जो खिदमात थी उसको लेकर जो है फारूखिया की जानिब से खुसूसन यहाँ के जो असातिज़ा थे जितने भी, उन्होंने जो है इनकी तहनीत और उनकी जो है हिम्मत अफजाई के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। बाकायदा प्रोग्राम पूरी तरह से कामयाब रहा। हम जानना चाहते हैं जिस तरह ऐसे माहौल में, ये बहुत ज़्यादा बिज़ी का माहौल है, बहुत ज़्यादा मसरूफियत का माहौल है, फिर भी आपकी शनाख्त को जो है पहचान कर आप ही के जूनियर्स या आप ही के जो साथ साथ हैं उन्होंने जो है ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। आप किस तरह महसूस कर रहे हैं सर? मैं फारूखिया कॉलेज के वजीफ़ायाब मुदर्रिसों की का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ नाचिस की खिदमत जो पिछले 44 साल से हुए हैं उसका एतराफ़ करते हुए मेरी तहनीत की, उनका मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ये अल्लाह का बड़ा करम है, उसका एहसान है। बेशक इज़्ज़त का देने वाला और जलील करने वाला वही है। बेशक मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने मुझे आज उस मकाम पर पहुंचाया कि लोगों ने मेरी कदर की, मेरे इज़्ज़त अफजाई की। जिस तरह आपके सिखाए हुए, आपसे सीखे हुए स्टूडेंट्स दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? मुझे बहुत खुशी है कि मेरे स्टूडेंट्स आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के कोने कोने में अच्छे ओहदों पर फाइज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ भी रहें अपने मुल्क का, अपनी कौम का नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें और कभी ये ना भूलें कि उनकी जड़ें इस मुल्क से और इस कौम से जुड़ी हुई हैं। वो जहाँ भी रहें इसे ना भूलें और जितना भी हो सके माली या दूसरे तरीक़े से ताउन अपने पुराने इदारों को पेश करने में आगे आगे रहें। जिस तरह बात करें असातिज़ा की, जिस तरह आप भी एक टीचर बनकर, आप भी एक उस्ताद बनकर जो है ये मुकाम हासिल किया है, तो उस्तादों के लिए, टीचरों के लिए, प्रोफेसरों के लिए आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगा? इस मौके पर मैं ये पैगाम देता हूँ कि हमारे असातिज़ा सिर्फ दर्स व तदरीस तक अपने आप को महदूद ना रखें, उससे आगे बढ़कर कौम के, मुल्क के, मिल्लत के बच्चों की सही रहनुमाई करें ताकि वो आगे चलकर कौम के लिए, मुल्क के लिए मुफीद साबित हो। और सबसे बड़ी बात मुझे जो है मैसूर के अवाम से करनी है। मेरी मुराद है कि मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि हमारे वालिदैन जब भी अपने बच्चे कम कामयाब होते हैं तो फारूखिया कॉलेज का रुख करते हैं, जब अच्छे नंबर लेकर डिस्टिंक्शन में पास करते हैं तो शहर के दूसरे कॉलेजों का रुख करते हैं। हमने तो हमारे हाथ से जितनी कुर्बानी देनी थी हमने दी है, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को, अपने दोस्त अहबाब के बच्चों को यहाँ दाखिल किया और जो है वो डिस्टिंक्शन होने थे और यहाँ आने के बाद भी डिस्टिंक्शन में रहे, कॉलेज का, माँ बाप का और अपना नाम रोशन किए। मैं चाहता हूँ कि कौम इस बात को समझें
अपना मेहनत से कमाया हुआ सरमाया गैरों की गोद में ना डालें, अपनी कौम की कॉलेज को स्कूल को लगाएं ताकि हमारी कौम आगे बढ़ सके। यही मेरा एक पैगाम है कौम के वालिदैन और बच्चों के लिए। आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह मैं ख़ुद भी जो है इसी इदारे का तालिब इल्म रहा और मोहतरम भी जो है इसी इदारे से इज़्ज़त पाई, शोहरत पाई, तो इस इदारे को बाकी रखना, इस इदारे को बरकरार रखने के लिए हम सब को क्या करना चाहिए? मैं अपनी तकरीर के दौरान बता चुका हूँ कि जो है हम लोग गलती से हुकूक़ुल्लाह को सिर्फ इबादत समझते हैं, चाहे वो नमाज का मामला हो, रोज़े का, हज का, ज़कात का। बेशक ये इबादत हैं, मगर इससे बढ़कर इबादत जो है वो हुकूक़ुल इबाद है। अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी इल्मी और अमली सलाहियत कौम के बच्चों के लिए लगाएं, ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह अभी अभी आपने सुना प्रोफेसर M.Sayeed साहब तालीम के मैदान में ही नहीं बल्कि अलग अलग शोबों में इन्होंने अपने खिदमात अंजाम दिए हैं। यही वो उनका ये पूरा सिला था कि आज उनको जो है बड़े आला पैमाने पर बहुत बड़े बड़े जो है यहाँ पर अमायदीन शहर और तालीम से वाबस्ता रखने वाले जो बहुत बड़ी शख्सियत हैं उनको जो है उस पर तहनीत पेश की गई है। तो बहुत कामयाब रहा जलसा। तो हम एक आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो है यहाँ पर कौन कौन मौजूद रहे, किस तरह यहाँ पर ये जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश की गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. ترجمہ اللہ اس کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کہو اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے. تو جس کو چاہتا ہے
इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत कर देता है। तेरे हाथ में सब भलाइयां हैं, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। तू ही जिंदों को मुर्दे से निकालता है और तू ही मुर्दे को जिंदे से निकालता है, और तू जिसको चाहे बेहिसाब रिज़्क देता है। मेरे रब ने सही फरमाया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Most distinguished guests and dignitaries and my dear friends, it's an occasion of great happiness for me to be here in your midst at this felicitation function of my very close friend and associate, Professor Saeed Ahmed, and to be asked to say a few words on this occasion. I consider this to be a very great privilege bestowed upon me by the management and the staff of this august college. I always feel proud when I am invited to the Farooqia group of institutions for any occasions. People invite me here and there for some reason or the other as a guest. But when I come here, when I get invited to this group of institutions, I feel very privileged, very happy and very honored. The reason is because although there are a few Muslim institutions in and around our city, including a few junior colleges, it is the Farooqia group of institutions under the Reformed Muslim Education Society which have been rendering the maximum service to our community in this part of the state. Let us give a very big hand to this, ladies and gentlemen. And while some institutions have been doing it intermittently, this group has been doing it continuously for more than 4 decades, 5 decades. And this is not an easy task. It needs not only manpower, it needs not only resources and money, but it needs at its core a group of really committed individuals who have decided in their lives that their service to society is what they are going to take away with them when they leave from this earth. That is the only reward they expect, and that is the only reward in the expectation of which Professor Saeed Ahmed also has served as the secretary of these institutions for such a long period. Nobody would have had the sense of commitment to do this, and when he accepted this responsibility at a time when he was pursuing his PhD is a very commendable thing, because in a person's life, a PhD degree is not an ordinary thing. It is the most supreme achievement that a person can have. And when he is of this pursuit, if he can be coaxed and persuaded into accepting an additional responsibility of this magnitude, it is a very commendable thing for him to do. So let's give him a big hand, ladies and gentlemen. And he has not just been the secretary of these institutions as a titular head, as a symbolic head. He has been the secretary of these institutions, a person who has been coming to these colleges, sitting under this roof, in the midst of this, the staff and students here, guiding them every day in and out.
That is how, as he said himself, by the career counseling that he did for all the students who applied for admission here, he could raise the standards of not only this college, but of their own education and their own lives. Very often, the bane of the Muslim children is that there is nobody to guide them properly. They think after they finish the 10th standard, they have to get admission into a college. But what to do in the college, which college to approach, what courses to select, all this judgment is absent in our children. And we do not have a system in our society by which we can guide these youngsters to choose the best options in their life. There's nobody doing it today. So, as I know him over so many decades, Professor Sayyid Ahmed has been doing that. And that is why he is one of the people in our society who has been able to take the life of many other people. And he has done it with courage. Why do I say that he has done it with courage? Where was the courage necessary? To put his own children, his own relatives' children, his friends' children into these institutions for the different courses takes a great deal of courage. See, most people, we say our children should do very well in life, but we do not put them in the mediocre institutions, so-called mediocre institutions, which we are managing. People who manage Muslim institutions, who are a part of that management, all their children are educated in the best institutions. Even I am an example. I never studied in a Muslim institution, but for a person who is managing a Muslim institution, a group of Muslim institutions, to put his own kith and kin here and show to the world what it can do to them is success. Give him a big hand.